The effect of hull falling also, as I said, this is the frictional resistance which increases because of the hull falling. And if you see here, these are the graphs which are available for the ship. If this is the graph which is curve which is available for the clean ship. And just to understand that if the vessel is proceeding with a clean hull at 24 knots, then if you draw from here vertical line cutting this curve and come down here horizontally, this value may be, let us say, approximately 13,000 kilowatt. So for 24 knots, the vessel's main engine is developing 13,000 kilowatt of power. If the hull is fouled like this, which is shown here on the right hand side of the diagram, to get this same 24, the curve shifts because of the resistance increasing. So this is a new curve. And to get the same speed, now we will have to go, which may be around maybe 17,500 kilowatt of power. So the speed you are getting same, but with the dirty hull, you will have to use much higher power to get the same speed, and obviously the higher fuel consumption. So now this is the relationship which we have established. Actually speaking, let me just a second, please. I'm just readjusting my laptop so that I can write also. So Admiralty coefficient is this one. Now Admiralty coefficient, as we said, is a combination of AC displacement raised to power 2 by 3. Now we will have to know from the calculator, because we will be using, if displacement is given, we should be able to calculate this value 2 by 3, delta raised to power 2 by 3. And V1, V is here the speed in knots when the vessel, and delta is the displacement. So here I will write delta 1 cube P1 power. Now this is Admiralty coefficient, and since it is a constant, that is why we are able to write it like this. So delta 1 raised to power 2 by 3 V1 cube P1 is equal to delta raised to power 2 by 3 V2 cube by P2. And we can further write it delta 3 raised to power 2 by 3 into V3 cube divided by P3. The meaning of this is that out of this 1, 2, 3 parameters, displacement, speed and power, if I change, I can know out of this, if I know 2 parameters, the third one can be calculated. For example, if the vessel is at sea, obviously apart from fuel, the displacement is not changing because you are not loading or discharging. So I can say this is same, so it will get cancelled, which means I have a situation where V1 cube over P1 is equal, this is V1, is equal to V2 cube over P2, provided there is no change in displacement. That means if I increase V1 from whatever was earlier, let us say 12 knots for example, if this was 12 knots, so 12 cube, and if my power earlier was 10,000 kilowatt, power will be in kilowatt. I want to know if I increase the speed from 12 to 15 knots, what will be the power required? Then I simply write 15 here cube divided by P2. So in this equation now everything is known except P2. I can calculate P2. So P2 will be, so I can take this here 15 by, so 12 will be down below, 12 cube multiplied by 10,000 kilowatt. So that is how I can calculate P2 in kilowatt. What will be the power required to move the vessel
to 15 knots. Or other way around, if I write here that if earlier it is moving at 10,000 kilowatt and I increase the power from 10,000 to 15,000 kilowatt, what will be the new RPM, new speed? So earlier was 12 knots. This I will put as 15 and I will get V2, which will tell me how much will be the change in speed, what will be the new speed of the vessel. So only one has to be unknown, rest should be known. So this is how we can make use of this equation. Let me just remove what was written here simply to make it clean slate. Okay, so this is a relationship we will use to either get value of any one of them. If other things are constant and displacement one is changed, what will be the new displacement? If speed is changed, what will be the new speed? Or if power is changed, I can calculate any one of them if other two are known under two conditions. So basically I have to first establish which are the two conditions. And that is why when we start solving, we always write given. So given under first set of condition, what is displacement? Delta 1 so much. What is the speed under this condition? So much. What is the power here? Suppose power is not known, I say question mark. I don't know. Under the second condition, if displacement has changed from 10,000 to 12,000, then I will write what is the displacement. What is the new speed? I will write here. And what is the power? I will write here. So only one will be the question mark left. Rest all should be tick, correct, right? Right? That is how this one can be calculated. If this is known, and here I have a question mark, then this one can be calculated. Similarly, anyone. So only one question mark should be left in because there are three parameters only, and I know I want two set of condition. This is the first set of condition. This is the second set of condition, and that is how I will use this formula with V1 delta 1 P1 and V2 delta 2 P2. Is it clear to everyone? Okay. Now let us start with a numerical. The power developed by a ship's engine was 20,000 kilowatt at a speed of 70 knots and a displacement of 40,000 tons. Estimate the power requirement to run at 12 knots and a displacement of 30,000 tons. So we have, as I said, we will need two conditions. First one is delta 1 here, delta 2 here. Delta 1 here is given. What displacement of 40,000 tons. So this is 40,000. Delta 2 30,000 and P1 is given 20,000 kilowatt. V1 is given 70 knots. Estimate the power required. That means P2 is not known to me. I put a question mark here. V2 is 12 knots. Units should be written. So delta 1, this is in tons. This is 30,000 tons. So I have one set complete. In the second scenario, I have delta 2. I want to know P2. V2 is also known. So using the Admiralty coefficient formula, which is delta 1 raised to power 2 by 3 into V1 cube divided by P1 is equal to delta 2 raised to power 2 by 3 into V2 cube divided by P2. I just apply here and calculate P2. That is the only thing which is missing in this equation. Alright then, please go ahead and solve it and let me know what is the answer you are getting.
So 5806.8. P2, na? Yes, sir. 5806.8. 5806 kilowatt. Yes. आंसर में यूनिट जरूर लिखिए. Okay, anybody else? Yes, sir. Same answer. Same answer. Okay, 5803.3 is what I got. It's nearly same. Anybody who has not been able to do it? Because let me just because still fairly reasonably big class. I must know whether everybody else is. Who has done it actually? May I know your name, please? Sir, Mukesh. Mukesh has done. One more, somebody else. Akhil. Akhil also. So Mukesh and Akhil have done. I would like to know if others have done also. Sir, 5806.7685. Rohit. Okay, very good. What about Pavanjit? नहीं सर, कैलकुलेट तो हो गया लेकिन आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा. मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ. हाँ, चेक कर लीजिए. ठीक है. गगनदीप, आपको आ गया? सर आंसर मैच नहीं हो रहा पर. ओके. यूज कैलकुलेटर ना. कैलकुलेट तो कर ही रहे हो गया वैसे. ऑफ कोर्स. लेट मी सी. अक्षय का हो गया. अशोक कुमार मीना, आपका हो गया? नो रिप्लाई. हाँ सर, हो गया है लेकिन थोड़ा अलग आ रहा है सर. अच्छा, चेक. ठीक है, चेक कर लीजिए. अविनाश है. ब्रह्म ऋषि, चिराग,
Is there anybody else who has been able to do? सर 5806.8 तक आता है, वो चलता है तो डेसिमल का? ठीक है 5803 5804 तो थोड़ा बहुत तो अभी आपको बिकॉज वी आर इन्वॉल्व विद द रेज्ड पावर 2/3 करेक्ट, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस आपका आ रहा होगा, बट ओके बिकॉज दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, slowly we'll see you will be more close to the. Okay, so let us move forward. The next one. Let me just open. A ship of 15,000 tons displacement has a speed of 40 knots. If the Admiralty coefficient is 410, calculate the power developed by the machinery. So this numerical of course is straightforward, but this also gives us an idea in what range are the Admiralty coefficient values. As you can see here, this is in the range of 410. So 400, 450, this is the range we are talking about. So in a numerical, if you have a numerical where you have to calculate Admiralty coefficient, we must know in what range it comes. Suppose instead of 410 by mistake your answer is 4100 or 4000 something, you must immediately be alerted कि नहीं ये तो 400 की रेंज के आसपास होते हैं, तो कुछ मैंने गलती करी है. ऐसे ही हम देखेंगे फ्यूल कोफिशिएंट, एक और आगे जब अभी तो हम पहुंचे नहीं है वहाँ पे भी वी मस्ट नो रफली क्या वैल्यूज होती हैं, सो दैट व्हेन यू कैलकुलेट एंड इफ दे आर नियरली सेम यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक ही निकाला होगा मैंने, but if they are too different then you have to recheck your calculation. So okay, so just let us do this numerical. तो 4044.6 आ रहा है. अच्छा निकाल लिया, वेरी गुड. पावर 4070.624 आ रहा है. So 4070 decimal 625. Yes, sir. 625 साथ में किलोवाट जरूर लिखिए, यूनिट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तो हम एक निकाल रहे हैं, फिर अब हमें आगे न्यूमेरिकल में क्या होगा, कई बार यूज जब करनी, जैसे स्पीड की मान लो आई, स्पीड आई मान लो आपकी कैलकुलेशन में 12.64 नॉट्स, और हम देखेंगे हमें आगे जहाँ यूज करनी है हमें इसको मीटर्स पर सेकंड में करनी है, तो वहाँ फिर हमें लिखा हुआ होना चाहिए, ये नॉट्स में है और हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 12.64 1852 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिवाइडेड बाई 3600. 1 nautical mile is equal to 1852 meters. 1852 meters. ये हम जहाँ अभी करेंगे तो आपको मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा. एनीवे, तो अभी सबका आ गया ये, एवरीबडी. तो वी हैव ए क्लास ऑफ 30, करेक्ट, 30 के आसपास है. सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. जी सर आ गया. आ गया ना, गुड. और चिराग भी है हमारे इसमें, रोशनी है. चिराग आपका आ गया? चिराग का पता नहीं. Okay, now let me put it other way around. Anybody who has not been able to get, ऐसा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर एक से पूछना तो. 4070.6. Okay,
4070. Anything close to this will be okay. Okay. So direct application. Okay. What we are doing is, because it is with some purpose. We are getting used to. We must be able to solve it quickly enough, because exam में जब आप करेंगे तो time is a factor. Okay, so we were here. The power, ये भी वैसे you won't find it difficulty, but we must have enough practice to solve this. The power developed by ship's engine was 3,200 kilowatt when her displacement was 10,000. Speed 40 knots. Estimate the power required to run at a speed of 60 knots when her displacement is. इसको I'm sure you must be following that. So if we had to calculate power required to run at a speed of 60 knots, so P2 will be P1 into delta 2 by delta 1 raised to power 2 by 3 into V2 by V1 raised. Same formula, but we can write it this way, so that within the brackets first we can solve this delta 2 by delta 1 and then take the value of 2 by 3. Similarly, V2 by V1. P1 of course is given here as 3,200 kilowatt. So this way it becomes a little faster and simpler. Instead of first calculating delta 2 raised to by 2 by 3 and then delta 1 in the conventional way, we can rewrite the same formula in this form and calculate what is within the brackets and then take the value of 2 by 3. So let us see. Sir, 3305.7. 3305. 3305.7 kilowatts. Okay, just let me see if others have also done and got the same answer. 5394.02. अच्छा तो बहुत इतना ही आ रहा है सर 5394.02 Yes, sir. 5394.02. 5394 5394 ही आ रहा है सर. और 335 का क्या बात 5394 5394 5394 आ रहा है. 5394 सबका सेम है. हाँ जी सर कम भी आया था ना किसी का 3000 समथिंग. ओके लेट अस सी कि है क्या. 5394 is okay. So all should be getting 5394. All right. Now we will see another thing here. Let me unshare. So this was first part for power calculation, and you may get a numerical based on this formula. I would like to reconfirm if everybody has understood how to use this equation, and if you find a numerical like this, you will be able to solve. Correct? Anybody having any difficulty, please tell me now only. So if all is good, then we move to
another concept. However, we will come back to this later. Come back because there will be question where we may have to use this formula, although the question may be related to fuel consumption. But there are both. That means for formula on the fuel consumption where we might be using a Admiralty coefficient formula also. So when that comes, we should remember that this is how we did and this is how we calculated quickly any power required or displacement. All right, so is it okay? Now let me open whiteboard and first I will discuss little bit on what is known as fuel oil consumption. Specific fuel oil consumption. It is in short called SFOC. 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 Now, what is SFOC? It is the fuel oil consumption in grams per hour. Sorry, per while developing one kilowatt of power. So if my engine is running, let us say, just to make it simple, so I have my engine here. This is my engine. This is a shaft and it is rotating at a certain RPM n. Correct? Now, if this engine is developing 1 kilowatt of power, how much is the consumption in grams per hour? Grams. That is SFOC. Is it clear? The definition part? And it is given as expressed as grams per किलोवाट आवर. ऐसे लिखते हैं इसको. लेकिन मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया. एक्चुअली इट इज ग्राम्स पर आवर पर किलोवाट, लेकिन इसको लिखने में ऐसे ग्राम्स पर किलोवाट आवर. इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 किलोवाट, अभी जैसे शिप इज नॉर्मली वी थिंक ऑफ कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ डेली कंजम्पशन. ठीक है ना? तो डेली कंजम्पशन को हम क्या लिखेंगे? डीसी, डेली कंजम्पशन. मान लो कि 24 टन्स पर डे है मेरी कंजम्पशन. तो अगर मुझे, और my engine is having a power, developing power at this consumption,
10,000 किलोवाट। और मुझे कहा जाए कि भाई SFOC क्या है, तो मैं कहूँगा कि पहले तो कंजम्पशन निकालता हूँ ग्राम्स पर आवर में। तो ये तो टन्स पर डे है, तो 24 अगर टन्स है पर डे तो 24 इंटू 10⁶ ग्राम्स पर डे हो गया मेरा। और अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया पर आवर, सो मेनी ग्राम्स। और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 10,000 से तो 1 किलोवाट के लिए आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ 10,000 का मतलब 1 2 3 4 10⁻⁴। दिस गिव्स मी the fuel consumption in grams per hour per kilowatt। क्योंकि पर आवर तो हमने कर दिया 24 इंटू, इससे तो ग्राम्स कर लिए, इतने ग्राम्स हैं डे 1 डे में, डिवाइड बाई 24 हो गया सो मेनी ग्राम्स इन 1 आवर, है ना। सो पर आवर सो मेनी ग्राम्स हो गया। और टोटल पावर है मेरी 10,000, तो 10,000 से डिवाइड किया तो 1 किलोवाट के लिए आ गई कंजम्पशन इन ग्राम्स पर आवर। तो ये मैंने काट दिया, इसके 2 कट गया, तो क्या आया 100 ग्राम्स पर आवर पर किलोवाट, ऐसे लिख सकते ना हम। ये आ गई SFOC। तो दिस इज SFOC। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके। और शिप पे क्या होता है कि जब व्हेन द शिप इज डिलीवर्ड, ये सब कैलकुलेट की होती है SFOC कितनी है। ये तो हमारी बाई चांस 100 आई है, एक्चुअली में जो आजकल के शिप्स हैं दे हैव ए SFOC समवेयर बिटवीन 178 180 के आसपास होगी। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है विद व्हाट टेक्नोलॉजी और व्हाट मॉडिफिकेशन दे आर यूजिंग, बट लेट अस से समवेयर हियर। तो अगर मेरे को SFOC पता हो, है ना, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। अगर आपको ये सब जो मैंने डिस्कस किया क्लियर है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं लेता हूँ SFOC ऑफ ए शिप्स engine if SFOC of ship's main engine is 200। मैं फिगर ऐसे ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, जब न्यूमेरिकल में जो आएगी वो देखेंगे। 200 ग्राम्स, अब ये लिखते हैं किलोवाट आवर, है ना, ऐसे लिख देते हैं किलोवाट आवर। ये इसकी SFOC है 200 ग्राम्स पर किलोवाट। इसका मतलब है 1 किलोवाट पावर के लिए 200 ग्राम पर आवर यूज करता है, ये गिवन है। व्हाट विल बी द डेली कंजम्पशन? Consumption at 20,000 kilowatt। That means when the power, shaft power जो डेवलप कर रहा है इंजन, वो 20,000 किलोवाट अगर है, तो क्या उसकी कंजम्पशन डेली क्या होगी पर डे, है ना। तो अगर मुझे SFOC तो पता होती है ना, SFOC जो है सी ट्रायल वगैरह में सब उसके ये डाटा कलेक्ट करके हमें कंपाइल करके दे दिया जाता है, भाई ये वाला शिप की इतनी है। चाहे वो बाद में थोड़ी चेंज हो जाए, पुराना होता जाता है तो मे नॉट गिव एग्जैक्टली सेम वैल्यू, लेकिन जब तक नया है कुछ सालों तक तो ये इट विल फॉलो मोर और लेस सेम वैल्यू ना। तो अगर मुझे पता है कि मेरे शिप की SFOC है 200 और 20,000 किलोवाट मैं चला रहा हूँ पावर पे, तो मेरी कंजम्पशन क्या होगी, फ्यूल कंजम्पशन। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्यूल कंजम्पशन कैसे लूँगा, पहले तो ये है 200 ग्राम्स पर ग्राम्स किलोवाट आवर, तो 200 ग्राम्स। अब ग्राम्स जो है पर आवर है, तो अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने ग्राम्स हो गया पर डे में, ठीक है, ग्राम्स हुआ।
और अगर मैं इसको 10⁻⁶ से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इतने टन्स हो गया पर डे में, लेकिन किसके लिए, 1 किलोवाट के लिए, और मेरा है 20,000 किलोवाट पावर चल रही है, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगी मेरी कंजम्पशन इन टन्स पर डे। पर डे यूँ आई क्योंकि ग्राम्स ये थे 200 ग्राम्स पर आवर, 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आवर्स के आ गए, 10⁻⁶ से डिवाइड किया तो टन्स में हो गया कन्वर्ट, हमारी डेली कंजम्पशन टन्स में ही होती है। लेकिन ये जो डाटा आया 1 किलोवाट के लिए आया, और मेरा शिप जो है, मेरा जो मेन इंजन है वो 20,000 डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए मेरी कंजम्पशन इतने टन्स पर डे होगी। अब इसको देखते हैं कितनी आती है। ये 2⁻1 2 3 4 ही हो गया, 5 और 6 तो 2 इसका बचा, 24 ये हो गया 48 और 2 9 48 इंटू 2, ठीक है 96 टन्स पर डे, ये मेरी कंजम्पशन आ गई। दैट मीन्स इफ आई वांट टू नो कि भैया मेरी कंजम्पशन क्या है, क्या होगी किसी वाई में भी, अगर मुझे पता है कि भाई मेरे जहाज़ की SFOC करंटली ये है और मैं इतनी पावर से चलाऊंगा अपने शिप को, तो मेरी कितनी कंजम्पशन आएगी, सो इट विल बी 96 इन दिस केस। अगर मैं 15 करूंगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। सो दैट मीन्स फ्रॉम SFOC आई कैन कैलकुलेट कि भैया कितनी कंजम्पशन आएगी। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग। नाउ एक पॉइंट और हम ये क्लियर है, दिस इज इट क्लियर टू एवरीवन? SFOC का फंडा क्लियर है ना अभी? Yes, yes. यस सर। ओके, अब मैं ये जो इसको मैं रब ऑफ कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए कि आपकी कंजम्पशन जो है, मेरा शिप चल रहा है 10,000 किलोवाट चला रहा है, 10,000 किलोवाट पे चला रहा हूँ मैं अपने मेन इंजन को, और मेरे को मिल रही है डेली कंजम्पशन, सिंपल ही रखता हूँ बस, चलो 40 पहले एग्जांपल वाले रखते हैं, 48 टन्स पर डे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी पावर कर दूं 20,000 तो मेरी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 2 × 48 इज इक्वल टू 96 टन पर डे। करेक्ट? एग्री और डू नॉट एग्री? सही है ना? अगर मैं 10,000 किलोवाट पे चला रहा था तो 48 टन हुआ, 20,000 मैंने डबल कर दी तो कंजम्पशन शुड बिकम 96। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तब होगा if my SFOC is constant. This will happen if SFOC is constant. एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि अगर 1 किलोवाट के लिए जो कंजम्पशन है वो 10,000 में इतनी है, तो उसकी डबल मैंने किलोवाट कर दिया, तो अगर SFOC सेम ही रहे 200, जब पिछली एग्जांपल में हमने SFOC 200 रखा, अगर 200 ही रहे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर तो ये ट्रू है, क्योंकि आपने सिर्फ चेंज क्या किया है, पावर, डबल पावर कर दी, तो SFOC 200 है ना, तो वो डबल, अगर ये वही रहा तो इनटू पावर इन किलोवाट, वही तो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो अगर ये मेरी डबल हो जाती है और SFOC सेम है तो कंजम्पशन डबल हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि SFOC कांस्टेंट नहीं रहता है, और उसका रीज़न है कि जब पावर हम बढ़ाते हैं तो लॉसेस जो होते हैं, दो टाइप के, एक तो फ्रिक्शनल लॉसेस जो होते हैं वो उस रेट पे नहीं बढ़ते जितना कि हम पावर बढ़ा रहे हैं, देयरफॉर एफिशिएंसी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है हमारी। तो एक्चुअली जो ग्राफ आता है हमारे पास,
जो बिल्डर बना के देता है ना सी ट्रायल में। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें इसका मतलब है ये जो कर्व आता है ये थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का आता है, यानी कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं इंजन थोड़ा थोड़ा एफिशिएंट होता जाता है। शुरू में फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा हैं तो एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब है फॉर 1 किलोवाट ऑफ पावर फ्यूल रिक्वायर्ड इज मोर हेयर, फॉर 1 किलोवाट ऑफ पावर हेयर फ्यूल रिक्वायर्ड इज स्लाइटली लेस। तो अगर ये 200 है यहाँ पे, लेटर से यहाँ 200 है, तो यहाँ पे ये 197 ही रह जाएगा और मिनिमम पे में भी 196। फिर यहाँ क्योंकि ज़्यादा पावर में फिर लॉसेस बढ़ रहे हैं, हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो ये फिर थोड़ा बढ़ जाता है। ये जो लोएस्ट वैल्यू है ये कोटेड होती है, मतलब कोटेड का मतलब देते हैं वो हमें कि भैया ये है, लेकिन ग्राफ के हिसाब से इट मे वेरी फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू। तो जब अगर हमारा यहाँ पे ले रहे हैं हम किसी फ्यूल कंजम्पशन और यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ले रहे हैं, तो पावर से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम SFOC, तो कंजम्पशन क्या है हमारी, कंजम्पशन एट एनी पॉइंट लेट अस से इज पावर इनटू SFOC ना। दिस इज a kilowatt, दिस इज SFOC इज ग्राम्स पर आवर पर किलोवाट। तो अगर हम ग्राम्स में रखें, उसको चेंज ना करें टन्स में, तो सिर्फ पावर इनटू SFOC इज द कंजम्पशन। तो अगर मेरा SFOC कांस्टेंट है तो कंजम्पशन डबल करूंगा या पावर डबल करूंगा तो कंजम्पशन डबल हो जाए। लेकिन पहली कैलकुलेशन में तो अब मैंने 200 रखा क्योंकि 200 था SFOC इंटू 10,000, 10,000 वॉज द किलोवाट पावर आई वॉज डेवलपिंग। फिर मैंने कर दी 20,000 डबल कर दी, तो ये 20,000 पावर जब मैं कर रहा हूं तो अगर तो ये 200 ही रहे SFOC तब तो कंजम्पशन डबल हो जाएगी, लेकिन ये रहता नहीं। ये कितना हो गया, 197 हो गया। तो अब डबल से थोड़ी कम होगी मेरी जो है ना कंजम्पशन। सो दैट इज व्हाई वी से दैट it will keep reducing and then of course later on it will increase. So अगर SFOC हम मान लें कांस्टेंट, अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम मान रहे हैं कि ये लाइन जो है ना इतनी बीच की, दिस इज नियरली हॉरिजॉन्टल और इसमें जो डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम कहते हैं इफ आई सेलेक्ट अ रेंज वेयर द change is very minimum, so we are rejecting that change and we are assuming SFOC is constant. इस एरिया में, in this area we can say power is directly proportional to daily consumption. इसका मतलब है कि अगर 10,000 पे मेरी 48 टन्स थी, 48 टन्स पर डे, तो 20,000 पे 98 हो जाएगी। लेकिन अगर SFOC चेंज हो गया, 200 की जगह 197 रह गया, तो ये 98 नहीं होगी, इससे थोड़ी कम होगी, मे बी 96.5 या 97 या 97.1। डायरेक्टली डबल नहीं होगी। डबल डायरेक्टली कब होगी, जब ये कांस्टेंट हो। तो अगर मैं मानूं कि कांस्टेंट है, सो दैट इज द अजम्पशन आई एम मेकिंग। अगर मैं अजम्पशन ले लूं फिर क्या होगा, मैं आपको फिर बताता हूं क्या होगा। अब हम कहते हैं कि एडमिरलिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा 2/3 इंटू वी क्यूब ओवर पावर if SFOC is a constant, then power is directly proportional to daily consumption. कह सकता हूँ ना मैं, डबल है तो टू टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स पावर करूंगा तो 3 टाइम्स डेली कंजम्पशन हो जाएगी, लेकिन ओनली इफ SFOC is constant.
In this case, I can replace power by daily consumption and AC by a new coefficient which we call fuel coefficient. Fuel coefficient is equal to delta 2 by 3 into V cube divided by daily consumption. ये मेरे पास नया फार्मूला आ गया नंबर 2. दिस इज द फ्यूल कोफिशिएंट फार्मूला. ये भी आप उसमें लिख के रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम हम इसकी ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे. लेकिन आज के लिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी हैव बीन एबल टू रिप्लेस पावर बाय फ्यूल कंजम्पशन डेली कंजम्पशन. डेली कंजम्पशन का यूनिट होगी टन्स पर डे. सो we get a new equation or new formula where we say fuel coefficient is equal to delta raised to power 2 by 3 into V cube divided by daily consumption, and this relationship is called fuel coefficient. ये हमारे को तभी पॉसिबल हुई है जब हमने एक assumption करी है कि SFOC is constant. इसलिए हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर तो SFOC कांस्टेंट है तब तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं. अगर SFOC कांस्टेंट नहीं है तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते. वो हम केस बाय केस बताते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे कि SFOC कांस्टेंट है कि नहीं है. एग्ज़ाम में भी आप वही फॉलो करना, उसी हिसाब से पहले डिसाइड कर लेना कि भैया SFOC इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है कि नहीं है. अगर कांस्टेंट है तो हम फ्यूल कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही और फिर हम आगे इससे अगली क्लास में विल डिस्कस. और किसी को कोई डाउट अभी तक है तो पूछ सकता है. हाँ जी. ये जो ग्राफ हमें मिलता है ड्राइड अप अपना न्यू बिल्डिंग के बाद, ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ द शिप आल्सो. ऑफ कोर्स. और सर जो जैसे डेली परफॉर्मेंस करते हैं घिस गए, थोड़ा वो हो गया, खराब हो गया, लाइनर घिस गया तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी. लेकिन ये नए वाले के लिए हमें ग्राफ मिलता है डेली सी ट्रायल वगैरह से ना, तब ये. यस सर. और जो डेली हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं इंजन का, तो ये भी एक पैरामीटर है जो हम चेक करते हैं पावर बढ़ाने में क्या. ऑफ कोर्स. अभी नया तो रहा नहीं, हमें अभी ये भी तो देखना अब क्या है. SFOC मेरा अभी ज़्यादा तो 5 साल पुराना हो गया या 6 साल पुराना हो गया. तो परफॉर्मेंस जब हम लेते हैं काम सी कंडीशन में, पावर कैलकुलेट करते हैं, फ्लोमीटर से एक्चुअल कंजम्पशन देखते हैं स्पेसिफाइड पीरियड का, जैसे 1 घंटे का ले लिया फ्लोमीटर से या 2 घंटे का ले लिया और पावर कैलकुलेट कर ली. तो अगर हमें पावर पता है, कंजम्पशन पता है, तो SFOC तो निकाल ही सकता हूँ ना. SFOC जो भी मेरी डेली कंजम्पशन है वो निकल आएगी डेली कंजम्पशन के बेस पे. डेली मतलब 1 आवर की पता है मुझे, तो वहाँ से मैं SFOC निकाल सकता हूँ. तो करंट SFOC आ जाएगा, मुझे पता चलेगा भाई नए में तो ये था 178 था, अब जो है 200 हो गया या 205 हो गया. ठीक है फिर विल ब्रेक फॉर लंच एंड देन सी यू अगेन. बाय.